हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू EconomicsExam क्लासेस। मैं हूं सुरभि और आज एपिसोड आपको जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं संडेज विद सुरभि के या फिर केस स्टडीज, तो दिस इज नॉट दैट वीडियो फॉर यू, बट टुडे दिस इज अ स्पेशल वीडियो और यू कैन से अ स्पेशल गिफ्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर going to appear for CUET and who have economics as a domain subject. So first of all, I would like to begin this video by thanking you all because as you all know, we started with Mission CUET 2024. That's a series on the YouTube platform where every day, Monday to Friday, 4 p.m., you're getting 4 questions to practice from the actual previous year paper. But if you feel that, there is still something lagging या आपको sufficient नहीं लग रहा है वो, आपको लग रहा है आपको कोर्स भी डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या मे बी you know other than actual paper question you need to practice more question, you need mock test, or you need another support, like you need one-on-one support from me. So this video is for you. So we are going to target how to score that 100 percentile in CUET economics, because as I said, it's not that difficult if you know. And जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे आजकल, नहीं देखी है गाइस, प्लेलिस्ट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल प्लेलिस्ट चैनल में। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाओगे, आपको वहाँ पे मिशन CUET 2024 देखने को मिलेगा, एंड प्लेलिस्ट उसी नाम से, उसमें सारी वीडियोस हैं। इन केस यू मिस एनी वीडियो, द प्लेलिस्ट विल हैव ईच वीडियो। ओके, सो हम 100 परसेंटाइल स्कोर करने के टूवर्ड्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअल पेपर में आपको दिखाती हूँ कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी चाहिए, मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाती हूँ बीच में, मैं आपको और बहुत सारी टिप्स देती रहती हूँ बीच बीच में कि which helps you, and that is our target. Our aim is to score that 100 percentile, everybody. So there's a special announcement. I am bringing for you all a CUET sprint batch, okay? And the sprint batch is beginning from 1st April, because I understand आपके boards चल रहे हैं, and if you're from science background, कोई और डेटा खत्म होने की, कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कोई और डेटा खत्म होने की, and even if you're from humanities, कोई और डेटा है. So I believe 1st April तक everybody will be sorted, and 1st April से we'll begin with CUET sprint batch. So as you know, sprint means running. So we will run, but in a very detailed manner, I would say, that you will have classes from me every day, मंडे टू फ्राइडे हम लोग रोज क्लास करेंगे, जिसमें क्या क्या होगा मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। लेकिन ये स्प्रिंट बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस, बिकॉज आई अंडरस्टैंड 15th मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, एंड बिफोर दैट कुछ बच्चे हैं जिनको रिवीजन चाहिए, कुछ है जिनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, कुछ है जिन्हें सिर्फ मॉक चाहिए। दिस बैच हैज एवरीथिंग गाइस, सो आप को कुछ भी चाहिए, आपको सब कुछ एक जगह अंडर वन रूफ मिल जाएगा। ओके, सो CUET स्प्रिंट बैच का हाइलाइट्स क्या क्या होने वाला है एवरीबॉडी। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल कवरिंग द एंटायर सिलेबस। एज यू ऑल नो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ CUET.samarth.ac.in पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाता है, एंड देयर आर 10 यूनिट्स इन इकोनॉमिक्स, जहाँ से पहले 2 यूनिट्स जो हैं वो आपके क्लास 11th, यानी ओके वी नॉट क्लासिफाई 11th और 12th बिकॉज आई डोंट नो आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं किसी और बोर्ड से, सो लेट्स कीप इट माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आपका जो पहले 2 यूनिट हैं, फर्स्ट 2 यूनिट्स आर एक्चुअली फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन रेस्ट ऑफ द यूनिट्स, next 5 units you can say are from macroeconomics, and then rest of the 3 units are from Indian economic development. But don't confuse yourself thinking कि ज़्यादा units macro के हैं तो macro की ज़्यादा weightage होगी. No, that's not the case. I myself appeared in the exam in 2023. I scored 100 percentile. If you need to check that, see my scorecard in the videos that I am uploading on Monday to Friday. But coming back to the main point, everybody, I could sense myself that the questions maybe are in number, the questions are like 7 to 8 from microeconomics, but the difficulty level of those questions is actually huge. So I would say that you need to focus on microeconomics, you need to focus as well on Indian economic development, everybody, because the questions are twisted. You need to remember data from some units. So students do have that confusion कि data किससे याद रखे, data याद रखना भी या नहीं रखना, या सारे chapters में से रखना है। There are lot many confusions that students face, everyone. So मैं आपको chapter by chapter बताऊंगी कि कौन सा data याद रखना है और कौन सा data relevant नहीं है, and I will show you with proof कि कैसे question आते हैं। Okay, and I myself, if you join my batch, I will provide you a consolidated data list from every chapter कि ये data है, you just इतना याद रखो and that's it.
सो यू डोंट हैव टू वरी कि कितना कहाँ से क्या याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद आपको दूंगी। उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सो यू कैन से कि हम मिशन सीयूईटी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस एवरीबडी, यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, बट अभी जैसे आप जानते हैं वी आर प्रैक्टिसिंग 4 क्वेश्चंस एवरी डे, बट 4 क्वेश्चंस यू नो देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस, सो द क्वेश्चंस जो रह गए होंगे उसके अलावा जो आप YouTube पे क्वेश्चन देख रहे हैं उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं पेपर्स में, हम वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। सो सीरीज कैसे चलेगी कि मैं आपको यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ, सो मैं आपको फटाफट से यूनिट 1 का सिलेबस कवर कराऊंगी। देन यूनिट 1 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी यूनिट 1 से आए हैं, मैं आपको वो प्रैक्टिस कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया करूंगी एवरी डे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल रिजेंबल यू नो द एक्चुअल पेपर और एक्चुअल क्वेश्चंस। एंड उसके बाद हम लोग जब ये हो जाएगा, आई विल प्रोवाइड यू विद 5 मॉक्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विच एक्चुअली वेरी क्लोजली रिजेंबल to your actual paper, and you will have to solve it to check where do you stand in your preparation. Okay, अगर आपको लगेगा 5 marks कम है everyone, I can just suggest and assure you कि उन 5 marks में everything has been covered, and rather than practicing 10, 15, 20 marks and not remembering even a single thing from one mock, it's better you know attempt 5 marks and revise it 4 times. I would suggest you that ऐसे आपके 20 मार्क्स भी हो गए, लेकिन आपको थरो होगा नॉलेज, एंड यू नो उसके साथ साथ जस्ट प्रैक्टिस द एक्चुअल क्वेश्चंस rather than attempting many mocks. You attempt 5 mocks, I would say, but practice is a must. Since practice is a must, so you practice again and again repeatedly the previous year questions. That will help you the most, I can assure you. Okay, then as I said, mocks with explanation you will get in this batch, and also you will get one-on-one guidance session, a special session from me where I will share some secret tips and tricks how to score that 100 percentile in economics everybody. And the bonus in this batch would be कि मेरी जो one-on-one assistance होगी वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई हैव बीन अ सीयूईटी स्पेशलिस्ट एवरीवन सिंस 2 years। जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है 2022 का एक्चुअल पेपर्स एनालिसिस से लेके 23 में मॉक्स क्रिएट करे मैंने, 23 के स्टूडेंट्स गए पेपर देके मॉक्स मेरे अटेम्प्ट करके, एंड दे यू नो आई हैव देयर टेस्टिमोनियल्स वेयर दे सेड यू नो that the mocks resembled the actual paper almost 90% everyone, and I shared the tips with them as well. मैं भी appear हुई थी 23 में, and I also scored 100 percentile. Okay, so you can trust me with that fact that you know you will get everything in this batch, and one-on-one experience ना जो classroom experience आपको मिलेगा, the classes will definitely be online everyone. So classes online होंगी, Zoom पे होंगी, and you will have a class with me every Monday to Friday. All right, every Monday to Friday you will have a class with me, and इस क्लास में ये क्लास तो प्रॉपर चलेगी ही चलेगी, इसके साथ साथ यू नो आप लोगों को क्या मिलेगा कि जो one-on-one classroom experience मिलेगा, the class will actually take place on Zoom, and the one-on-one experience you will get with me will you know definitely help you in your journey and do will add a good value, I can assure you. So our first goal would be to revise entire syllabus, practice and you know practice related previous year questions as I said of 2022 and 2 दोनों सालों के कराऊंगी मैं, and all the papers I will make sure कि आप लोग practice करो. Then our second goal is practice 5 mocks with detailed explanations. We will practice 5 mocks and also one all India level mock which would be free, which would be a bonus. Okay, so even if you decide not to join my batch, then also I will you know float a mock जो सब लोग attempt कर सकते हैं to see where they stand. Okay, and our third goal would be a one-on-one discussion of PYQ. हम one-on-one discuss भी करेंगे guys, so it's not that कि मेरे बैच में मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है एंड यू हैव नो राइट टू स्पीक अप एंड यू हैव नो राइट टू आस्क योर क्वेश्चंस, और कोई भी डाउट्स है मॉक्स में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहा है, हमारी उसकी डिस्कशन क्लासेस one-on-one अलग होंगी, ठीक है. एंड लर्न टेक्निक्स ऑफ स्कोरिंग 100 percentile in economics as I said, and also this batch will have you know many students. So आप उन students, क्योंकि वो अलग अलग स्कूल से होंगे या अलग अलग रीजन से होंगे, तो आप उनसे उनको क्या एडेड मटेरियल मिल रहा है हम लोग वो भी एक्सचेंज करेंगे, so that you know you get that motivation, because when you're studying alone
तब उतना नहीं पता चलता। जब सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक अलग ही लर्निंग एक्सपीरियंस होता है एवरीबडी। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड गाइस, we are starting the enrollment process. I understand that the batch is beginning from 1st April, but we are starting the enrollment. Why? Because there is, if you need to, if you wish to enroll, or you need to know something else and discuss something with me, you can write a mail to me on this particular email ID. Okay, and it would, even if you don't want to form a very formal mail, don't worry guys, I understand. You just mail interested for CUET sprint batch, इतना लिख दो बस उस मेल में, ठीक है, और क्या क्वेश्चन है अपने वो लिख दो. So definitely I would know that you're serious, and then I will provide you my contact details and we can discuss it on call. Okay, so enrollment इतनी जल्दी करने का रीजन क्या है everyone? Because अगर आप 15th February 2024 से पहले enroll करते हैं, so you can avail a special early bird discount. Okay, and वो क्या है? I am not announcing it here on this public platform, guys. Why? Because I am not sure, I cannot classify इधर से कि कौन serious है कौन non serious है. So it's better that we have this discussion one-on-one. So, but I can assure you, I will provide you a detailed brochure if you contact me on my mail ID, which is again, you can see it on the screen, which is this. And I will provide you with a detailed brochure where I will let you know the actual price and the early bird discount जो आपको मिल रहा है if you enroll before 15th February. All right, so that's there, and comment if you have any questions for us guys. And just I would want to say thank you so much for making this entire CUET mission CUET series on YouTube success. I would say we are towards the journey. I mean, we are towards our goal in this journey, and I believe that you guys are enjoying. And even if you're tiny bit of a doubt, please don't hesitate कि कैसा डाउट है क्या नहीं है. Just comment, and all the best everybody, and I hope I get to see you one-on-one in my classes from April. And once you enroll, we will have a one-on-one Zoom discussion as well, where I can provide you in detail. मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प बोर्ड्स में भी कर सकती हूँ. So we will decide that once you decide to enroll with us. Okay, so thank you so much everyone. All the best.